Hello, so today I'm doing sulfonamides or sulfonamides. हमारे पास are a class of drugs which are bacteriostatic, and these include sulfamethoxazole, sulfadiazine and sulfasalazine. अब इन sulfonamides के साथ अक्सर हम लोग दो और drugs भी पढ़ते हैं which are trimethoprim and pyrimethamine. ठीक है, तो इनका अक्सर sulfonamide is not given alone. It's almost always for to specific conditions it is conjugated to either trimethoprim or pyrimethamine क्योंकि इनका mechanism of action is somewhat overlapping. So let's get to its mechanism of action. So this cannot clearly be defined as protein synthesis inhibitor या फिर cell-1 inhibitor. This is a class of drugs called folic acid inhibitors. Now folic acid या vitamin B9 is necessary for purine synthesis. So if you inhibit folic acid, you inhibit purine synthesis, you inhibit DNA production, which is needed by both human beings and by bacteria. तो बैक्टीरिया कैसे फॉलिक एसिड अपनी सिंथेसाइज करता है? इट डज दिस बाय टेकिंग पैबा विच इज़ इट्स स्टार्टिंग प्रोडक्ट. अब इसका पूरा नाम वेट Okay, so PABA stands for para-aminobenzoic acid. This gets taken by the enzyme para-aminobenzoic acid synthetase gets converted into dihydrofolate. Dihydrofolate reductase enzyme इसको लेता है and converts it into tetrahydrofolate, which is the form that is used by bacteria. Now what sulfonamides do is that they act as PABA analogs. तो PABA की जगह ये आके यहाँ पे PABA synthetase के पास attach हो जाते हैं, and that basically stops the whole process. Now coming to trimethoprim and pyrimethamine, इनका mechanism of action is somewhat similar. These are basically dihydrofolate reductase inhibitors. तो वो PABA synthesis के point पे sulfonamides रोक रहे हैं folic acid synthesis, और trimethoprim and pyrimethamine इसको dihydrofolate reductase की point पे रोक रहे हैं. Anyways, they both inhibit folic acid synthesis. ठीक है. Now coming to its pharmacokinetics, this is both used orally and topically, or this gets taken to the lung. बल्कि पहले ये होता है. This is a bit out of order. Yeah, चलो whatever. तो this gets taken orally and topically and gets absorbed into the bloodstream. Bloodstream पे इसका एक बहुत important action ये है कि this gets strongly attached to albumin. ठीक है, तो जब ये खुद स्ट्रांगली अटैच होता है एल्ब्यूमिन पे, तो एल्ब्यूमिन पे जो पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग ड्रग अगर होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा एंड कॉन्सिक्वेंटली विल इंक्रीज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग. दोज ड्रग्स या दोज सब्सटेंसेस पर्टिकुलरली इंक्लूड जो मेडिकली रेलिवेंट है इंक्लूड बिलिरुबिन, वारफेरिन एंड मेथोट्रेक्साइड. तो वो इन सब की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा कर देगा, एंड वारफेरिन की वजह से देयर कैन बी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग या फिर देयर कैन बी एक्सेसिव ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ वारफेरिन. ठीक है, और बिलिरुबिन का भी एक इफेक्ट है, बट आई विल गेट टू दैट लेटर. खैर, तो दिस गेट्स वेरी स्ट्रांगली अटैच्ड टू एल्ब्यूमिन. दिस इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड देन इट गेट्स टेकन टू the liver where it is metabolized, where it is acetylated and conjugated, and finally excreted from the kidneys. Now kidneys में it's excreted in its active form, in acetylated form. तो कुछ active होता है, कुछ इतना inactive metabolites होते हैं, but it also is very nephrotoxic. So we'll have to remember that. And also a very other important correlate is that this is sulfonamides are cytochrome P450 inhibitors. तो वो तो वारफेरिन के एक्शन को यहाँ पे भी ज़्यादा करें, एंड बाय इनहिबिटिंग इट्स मेटाबॉलिज्म इट्स गोना फर्दर इंक्रीज द एक्शन ऑफ वारफेरिन, क्योंकि वारफेरिन इज अ साइटोक्रोम P450 सबस्ट्रेट. ठीक है, तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कोरिलेट. ठीक, कमिंग टू इट्स स्पेक्ट्रम, सो दिस एक्ट्स ऑन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. हाउएवर वी डोंट कॉल इट ब्रॉड स्पेक्ट्रम बिकॉज बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है दैट हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू सल्फोनामाइड्स, such as Pseudomonas and Enterococci and so forth. They do this by changing their PABA synthetase, मतलब अपने एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेते हैं या ईफ्लक्स पम्प की वजह से. ठीक है, तो anyways, coming to its spectrum, so this is used to treat UTIs, which this is very general, right? UTIs get used by gram-negative bacteria, Enterobacterium. It's used to treat prostatitis. But now coming to its more specific uses, sulfonamide or sulfamethoxazole is used to treat nocardia. Nocardia, as you know, is a gram-positive rod.
So this is important कि this is a primary thing used for nocardia infections. Secondly, it is used in IBD for ulcerative colitis और इसके लिए sulfasalazine use होती है, ठीक है. Again, a very important correlate is that this is used topically for burns and ulcers in the form of silver sulfadiazine, जो कि topically basically as a depot काम करता है. Silver को constantly wound के अंदर लेके जाता है और it keeps it clear of bacteria, so that bacteria cannot proliferate in burn wounds. Next, a very important again use is that this is used in toxoplasmosis और इसके अंदर इसका sulfadiazine with pyrimethamine यूज़ होता है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे आई डोंट थिंक सल्फर ड्रग्स के नाम दमसेल्व्स याद करना ज़रूरी है. आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कौन सी कॉम्बिनेशन में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. सो फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल, स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, वी यूज सल्फाडाइजीन विद pyrimethamine. And again, in like immunocompromised patients, especially AIDS patients, हम लोग pneumocystis जिरोवैकी की वजह से जो pneumonia होता है उसके लिए we give sulfamethoxazole with trimethoprim, ठीक है. So this is given in combination with trimethoprim. ऊपर वाला pyrimethamine, both are used for immunocompromised patients, but for toxoplasma it's PMT, and for PJ pneumonia it's TMP. Okay, next it's also used for malaria, sulfadoxine with pyrimethamine, ठीक है. इसका combination यूज होता है to treat malaria, plasmodium falciparum. और next it's also used as an ophthalmic for ophthalmic infections या eye infections, and it also has activity against MRSA, ठीक है. Now coming to its side effects. So side effects में I think if you don't remember anything else you should remember Stevens-Johnson syndrome, but we'll go order से. सबसे पहले this is nephrotoxic like I mentioned, and this can cause interstitial nephritis. This can cause crystalluria क्योंकि जो sulfonamide का acetylated product होता है that in a acidic pH this will start forming crystals and it will get deposited. So in order to cure this you try to alkalinize the urine to treat this, ठीक है, क्योंकि अल्कलाइन हो जाएगा तो फिर क्रिस्टल्स नहीं फॉर्म होंगे. इसके अलावा इट ऑल्सो कॉजेज टाइप 4 ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसकी वजह से पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है ब्लड में. हाउएवर इफ़ यू जस्ट रिमेंबर इट्स नेफ्रोटॉक्सिक, आई थिंक दैट शुड बी इनफ. नाउ कमिंग टू इट्स मोर इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट विच इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को याद करने का देयर इज़ एन ईजी निमोनिक दैट्स कॉल्ड स्टॉप. एंड स्टॉप के लफ्ज़ से ही सबसे पहली चीज़ हमें याद आती है कि स्टॉप, you say stop when you have Stevens-Johnson syndrome because it is extremely painful. So it's characterized by sloughing off of the skin, या फिर slipping, the skin just slips off of you. इसकी वजह से as you can imagine there is blistering and all that stuff correlated with sloughing off skin. For T you can remember 10, which stands for toxic epidermal necrosis, which is like a differential diagnosis. इन दोनों के बीच में differential diagnosis होता है. However 10 के लफ्ज़ हम ये भी याद कर सकते हैं कि अगर less than 10% of the body surface is affected तो फिर it's Stevens-Johnson syndrome. However if more than 30% is affected so that is toxic epidermal necrosis. However इधर 10 का मतलब हमारे पास 10%, like less than 10% body involved है, so that's why it's Stevens-Johnson syndrome. O stands for orifices. Either orifices are affected, mostly the mouth, genitals, eyes. Again, it's very painful, and it also causes a very painful rash. Now this is a macular rash and इसका एक target like configuration होती है. पीछे macula होता है, फिर pallor होता है, फिर इसके साथ again there's erythema at the borders. I think this can be called erythema multiforme, but I'm not sure. इसके अलावा in the book I also rash से ही अगर आप याद रखो तो this also causes angioedema. Sulfonamides cause angioedema, which is a rash that is subcutaneous. It's not epidermal, it's not dermal, it's subcutaneous. It's very deep down and it affects the mouth and the face mostly. Okay, then another side effect is anemia. This mostly causes a G6PD deficiency wala anemia, hemolytic anemia, the hemolysis hota hai, and that produces bite cells. And last two are sort of related. So sulfonamides are contraindicated in neonates क्योंकि neonates के अंदर bilirubin जो है वो albumin के पास attach होता है, but when sulfonamides come they displace the bilirubin, तो ब्लड में बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है. बच्चों का ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. द बिलीरुबिन गोज़ एंड इट crosses the blood-brain barrier and causes kernicterus,
which is neonatal jaundice that goes to the brain and causes mental retardation and neurotoxic symptoms. And secondly, this is also very, very teratogenic, which is a bit intuitive because this is a folic acid inhibitor, okay? Vitamin B9 inhibitor, and you need to take vitamin B9 during your pregnancy to avoid neural tube defects. So if you're taking sulfonamides, B9 nahi mil raha body ko, and that will result in neural tube defects in the babies. So yeah, and if there are symptoms are specifically caused by folic acid deficiency, so that can be treated by using folinic acid. He cannot folic acid, folinic acid is given to patients to treat this. Am I missing something?